Hello friends, my name is Surbi and welcome to my YouTube channel CA Surbi Girl. I am going to discuss with you all the latest updates in taxation with you. I hope my video has been useful to you. So if you really enjoy my video, you can subscribe my YouTube channel CA Surbi Girl and like my video and give your comments on the comment section below. Today I am going to discuss with you in a very important section 194N, which has been inserted by Direct Tax Department recently in 2019 year. So let us understand what does 194N section says. So the section says that if you are making cash withdrawals from banks, post office or cooperative banks exceeding INR 1 crore rupees in a financial year, then the person is liable for making TDS payment at the rate of 2%. So I repeat, अगर आपने किसी बैंक से, पोस्ट ऑफिस से या कोऑपरेटिव बैंक से 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश विड्रॉ किया है इन अ फाइनेंशियल ईयर, तब आपको 2% TDS डिडक्ट करेगी बैंक या पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक. And provided the defaulters in filing ITRs for last 3 years preceding the year in which cash withdrawal is made. I repeat, the defaulters in filing ITRs of last 3 years preceding the year in which cash withdrawal is made is liable for the TDS as follows. So there are 2 slabs if you are defaulting in ITR return filing. If the amount of cash withdrawal is exceeding 20 lakh rupees, TDS is liable to be deducted at the rate of 2%. And if the cash withdrawal is exceeding 1 crore rupees, TDS is liable to be deducted at 5%. So you have to, the defaulters in filing ITRs have to see that they have to file the ITRs for the last 3 years consecutively. There should not be any missing year in between. If you are not filing ITRs for regularly last 3 years preceding the year in which cash withdrawal is made, the tax slabs will be as I told you. Else, if there is no default in filing ITRs, there is general TDS of 2% exceeding 1 crore rupees. Also, what is the intention of bringing this section? The government basically wants cashless economy and to curb black money. It really wants to stop the payments in cash. So the intention of bringing this cash section is ताकि हम कैश में पेमेंट्स ना करें और हम क्या कहते हैं, जो भी ब्लैक मनी की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस पर हम चेक रख सकें, क्योंकि 1 करोड़ इज द अमाउंट यू कैन थिंक इज़ अ वेरी बिग अमाउंट. तो आप अगर कैश विड्रॉ इतना ज़्यादा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसलिए बैंक गवर्नमेंट ने TDS डिफाइन कर दिए. एंड रिसेंटली ऑन 12 जुलाई 2020 एक नोटिफिकेशन आई है. आप डायरेक्ट टैक्सेशन की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन की साइट पे जा सकते हैं. जो एक सुविधा इन्होंने अभी रिसेंटली लाई है, जिसमें बैंक्स वगैरह को नाउ दे जस्ट हैव टू एंटर द पैन डिटेल्स of the person in their system, in their core banking solutions, and automatically they will route that into the tax department site. and अब आपको बार बार बैंक्स वगैरह और पोस्ट ऑफिस को बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा कि उस पर TDS कितना एप्लीकेबल है. वो सीधा इनकम टैक्स के पोर्टल पे रूट कर देगा एंड इनकम टैक्स की साइट अपने आप कैलकुलेट कर लेगी TDS.
तो आप ये नोटिफिकेशन एक बार जाके CBDT की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं. सो दिस फैसिलिटी इज़ फॉर ऑटोमेशन ऑफ बैंकिंग सॉल्यूशंस, क्योंकि बैंक्स के पास भी बहुत काम है. वो अगर एक एक क्या कहते हैं टैक्स पेयर का अगर देखने लग गई तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. So this facility has been introduced. So I'm really hope you like my video and the information is useful. So for more updates, stay tuned to my YouTube channel, CS Urbi Girl. I'm going to share my next video soon. So thank you all. Good afternoon. Bye.